This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना
innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Shukran lillahi walhamdulillah. Shukran lillahi walhamdulillah. Ya Ali Madad, Aziz sir. या अली मदद, या अली मदद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तमाम साथियों को या अली मदद। Thank you for joining us this morning. Inshallah, with Imam's help and mercy, we will continue on the journey on understanding the Ginan. Today's Ginan is very unique, not very much recited Ginan, but as requested, we will try our best with Imam's help to listen and to understand this Ginan. Let's start with asking Imam Zaman for his mercy, his help. Nur Maulana Shah Karimul Hussaini Hazir Imam, Hazir Imam. Ya Maulai Mehrban, Madad Farma, Madad Farma. Alayul Qayyum, Ali Allah, Madad Farma, Madad Farma, Madad Farma. Ya Rahman, Ya Rahim, 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 Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Mola Madad Farma, Ya Mola Mehrban, Madad Farma Mola. Tawfiq, Tahid, Himmat wa Yari Mola. Tawfiq, Tahid, Himmat wa Yari Mola. या मौला अपने नूर से हम गरीबों की मदद फरमा मौला, अपने नूर की रोशनी में हमारी हिदायत फरमा मौला, ताकि हम इल्म के इस रास्ते पर चल सके, आगे से आगे बढ़ सके मौला। तेरे हिदायत के बगैर, तेरे नूर की रोशनी के बगैर या मौला हम एक कदम भी नहीं उठा सकते हैं मौला। या मौला मेहरबान, मदद फरमा मौला, मदद फरमा मौला, जल्दी से मदद फरमा मौला, जल्दी से आ जा मौला और मदद फरमा मौला। या मौला मेहरबान, मदद फरमा मौला, मदद मौला, मदद। तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला। तमाम साथियों को एक बार फिर यारी मदद। We will recite this Ginan in a minute. Let me introduce the Ginan. As you can see on your screen, Alaf
निराला, खालक, राजा. One of the very unique Ginan, and remember it is according to the time and the place. एक बहुत ही अजीब और गरीब गिनान है, ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है जमात में, लेकिन चूंकि दरखास्त इस गिनान की थी और इस गिनान के अंदर से हमें इंशाल्लाह फिर माँ बाप के बहुत ज्यादा जवाहरात, इल्मी खजाना हासिल होगा. हम दरखास्त करेंगे इस गिनान को पढ़ने के लिए और उसके बाद हम दोबारा लौटेंगे फरमान के साथ और गिनानों के अल्फाजों के साथ. जी AZIZ Alafa Niraale Khaalak Raajaa अलगटा भी अंधारा सोही जी अलगटा भी अंधारा सोही जी. AZIZ घटा अंधारा सेवा तेरी अल्लाह सोही घटा निरामला होई जी अल्लाह सोही घटा निरामला होई जी. AZIZ इमाम पीछानो तो सीधा का रास्ता तू सजनता पाओगे थाना जी तू सजनता पाओगे थाना जी. AZIZ शैतान ताएता बहुत जाकिया सात जमीन आसमान जी सात जमीन आसमान जी. AZIZ आदम खलीफा आगे नमी आना ही सो तकबूरा किया नादा ना जी सो तकबूरा की या नादा ना जी.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत नवाजिश। Let's go and try to understand this Farman, and then we'll come into the Ginan itself. This was the very Farman we read last week, because this Farman is related to this Ginan, so it was left to be read again. ये वो फरमान है जिसको हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा था, लेकिन चूंकि इस फरमान के अंदर और इस गिनान के अंदर एक राब्ता है, इसीलिए इस फरमान को दोबारा आज पढ़ा जाता है. What you will see in this Farman, which is connected to this Ginan, is that those who do not understand Ginan, meaning ilm, are the ignorant one. आप इस फरमान के अंदर क्या देखेंगे कि वो लोग जो इल्म को नहीं समझते हैं वही इग्नोरेंट है, वही इग्नोरेंट है, और ये गिनान से इसका कनेक्शन है, इसीलिए आज इसको दोबारा पढ़ा जाता है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद. There are some among you who recite the ginans but don't understand its interpretation, don't know the meaning of the ginan, the ilm. One who has no understanding, he is like an ignorant. While the Hakiki believer contemplates in the heart. Zanzibar, 11 September 1899. तुम में से बहुत से ऐसे हैं जो गिनान तो पढ़ते हैं मगर गिनान को समझते नहीं है, और ना ही गिनान के अंदर जो इल्म है उसके मानी जानते हैं, और वो जो इसको नहीं समझते हैं वो जाहिल है. इल्म तो है उनके पास लेकिन जाहिल है, जबकि हकीकी मोमिन जो होगा वो इसके बारे में अपने दिल के अंदर सोच और विचार करेगा. मौला फरमाते हैं, ज़ांज़ीबार 11 सितंबर 1899 का फरमान है, और आप देखेंगे कि ये फरमान किस तरह से इस गिनान से रिलेटेड है. You will see how this one highlighted line in this farman is related to this Ginan, inshallah. Let's come to the Ginan. Alaf Niraale. You notice that in translation, I have removed the word thousand. Alaf means thousand, but you do not see that in translation here. I intentionally removed it. आप में से जो इस लैंग्वेज को समझते हैं और बाद में ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, and there is an actual translation link provided here that you can go and look it up, and you will find Alaf translation meaning thousand. लेकिन मैंने यहाँ पर उसको हटा लिया है. उसकी क्या वजह है? वो इल्म की समझ के साथ आती है. Why would I remove a correct translation? Alaf truly correctly means thousand, but I removed it. Why would I do that? Remember when our peers were writing these ginans, they would use the language and the examples the way those people
600-700 years ago would understand. Alaf Nirala means he is one in thousand, because that was the example used, that he is one amongst many. But today in our language we have a correct vocabulary for this word, and that is Alaf Nirala, the one in thousand, the one, the unique. पीर साहब क्या फरमा रहे थे कि वो 1000 नहीं, या 1000 में से नहीं, वो यकता है और उसके जैसा और कोई नहीं है। क्योंकि ट्रांसलेशन और समझ वक्त के हिसाब से होती है, कल्चर के हिसाब से होती है, कौन सी जबान हम बोलते हैं उसके हिसाब से होता है। क्योंकि ये उस जमाने में लिखा गया था जबकि लोग इस बयान को इस तरह से बयान करते थे कि ये हजारों में एक है। But today we use the same word that he is one in the million. लेकिन आज हमारे पास एक अच्छा वर्ड है, वो क्या है कि वो यकता है, उसके जैसा कोई नहीं है। Today, because the time has changed, the vocabulary has changed, the understanding has changed. So whenever you are looking at this Gnan, you need to bring those Gnan in our time with the understanding that if this Gnan was written today, what vocabulary would it be used or how would it be used? So Alaf Nirala 700 years ago would have translation of 1 in 1,000. Not 1 in million, 1 in 1,000, literally. What it really meant was that he is the one, the unique, कि वो यकता है और बेमिसाल है। देखा आपने, ये फर्क है जब आप ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं और जब आप हकीकी मानों को समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम माने करने के लिए हैं, ट्रांसलेशन तो कोई भी कर सकता है, आप खुद ही लाइन पर जाकर पढ़ सकते हैं, नाचीज ने लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। ट्रांसलेशन के लिए आपको इस गरीब और नाचीज की जरूरत नहीं है। मीनिंग के लिए हम मिल मिलाकर एक साथ combinedly trying to understand the meaning, not the translation. Okay. Having said that, let's look at this part. That Alaf Nirala Khaalak Raajaa, the one, the unique, the creator and the king, कि वो खालक भी है, बनाने वाला भी है और बादशाह भी है। Now, normally, if you look at the history of the world, whenever king likes to create something, what does he do? He puts out an order, his wish and his will, and others build and follow. But here it's Peace I've right, not that only that he is the king of the king, but he is the one who created. He created the best creation, his own soul, and that is the human, amongst the human prophets, amongst the prophets, Imam, and then with the Imam, the believers. So what he is saying,
that he is the one who creates amongst the human the best of the human, because his creation, when he touches that creation, is the best, and he is the best of the best creator, the king. यहां पर देखें, एक समझने की बात है कि अमूमन जब बादशाह को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो अमर करता है, हुक्म सदर करता है, और लोग उसके अमर को, उसके हुक्म को मानते हुए चीजों को बनाते हैं। बादशाह खुद नहीं बनाता है, लेकिन यहाँ पर फरमाया गया कि ना सिर्फ वो बनाने वाला है बल्कि वो तो बादशाह है। तो यहाँ पर उसने बैठकर कहीं पर दुनिया नहीं बनाई, लेकिन उसने तमाम दुनिया के अंदर से उसकी जो बेस्ट क्रिएशन थी, और वो क्या थी? इंसान। इंसानों के अंदर से नबी, रसूल और पैगंबर बनाए, उनको रूहानी तौर पर क्रिएट किया, और उनके अंदर से आइमाए तायरीन बनाए, उनको रूहानी तौर पर क्रिएट किया, और उनके साथ उनके हकीकी मोमिनों को बनाया। और आगे जाकर आप देखेंगे इसका डिटेल भी है कि उनको मोमिनों को बनाया, और वही उसकी बेस्ट क्रिएशन थी इस बादशाह की, जो एक और बड़ा निराला, यूनिक है। And he is the creator and the king, and is indeed the Allah, who is the creator, who is within yourself, the one in your heart, one in your soul, one that you believe in. He is that one who have created you as a mu'min, the best creation, the best out of the best. The creation was created by Akle Kul and Nafse Kul. Out of their creation, he personally took interest in creating the best of the humans. And look at how fortunate we are. He created the Nabi and prophets and the Aimai Tairin. Amongst them, he created the Arifin and Mu'minins. He took personal interest in you. आप इस बात को अगर नहीं समझे हैं तो आखिर में जरूर पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि खुदा कब और किसको बनाता है, जबकि वो बादशाह है, और वही आपके दिल में बसता है। एज ए मोमिन वही आपके दिल में बसता है, क्योंकि वो आपका खालिक, मालिक, रब है। Let's come to the second part of this, and you will see again on the same line of understanding ilm that he, whomever he penetrates and enter. Now when you will go into the translation, you may find different words there, and you can see it in your in the Gujarati Gnan, AG Jis Gat. The Gat means home, घर, लेकिन यहाँ पर गत जो है वो आपकी बात हो रही है, वो आपके जाती आलम शख्सी की बात हो रही है। In the translation you will find gat means wherever, wherever, and that is correct translation wise. What does it mean? In whichever home or in whichever personal world in you.
he penetrates, enters then. Because remember Imam's Farman, the Noor and the Didar is not your right, but he gives, he blesses. You cannot bring the Noor and the Didar and the Imam in you, but he comes into you. He enters into you. He penetrates. That is the correct word. कि आप उसके दीदार को, उसके नूर को नहीं पहुंच सकते हैं। मौला क्या फरमाते हैं, जब तक अल्लाह की रहमत आप पर नहीं आती है, जब तक इमाम आपसे राजी नहीं हो जाता है, तब तक ये नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपना हाथ बढ़ाएंगे और उस नूर को ले लेंगे। It doesn't work like that. Until he penetrates, जब तक वो खुद आपके दिल के अंदर जगह बनाकर आपके दिल में उतर नहीं आता है, आपके दिल में नहीं उतर जाता है वो। तो यहां पर फरमाया पीर ने कि आप देखें कि उसने आपको बनाया, और यहां पर सिर्फ आला दर्जात के मोमिनों की बात हो रही है, और वो ही खुद ही आपके दिल में उतर आया है। Here we are talking about those who Allah has personally took interest in and created, the higher ranking mu'minin, and he himself had blessed and mercy on your soul, have penetrated your heart and have entered in you, in your personal world. In Surah Nur, ayat number 36, Allah talks about that where will you find that Nur? In the homes of the Mu'mineen. आपको खुदा का नूर कहां मिलेगा? तो सूरह नूर आयत नंबर 36 के अंदर फरमाया कि मोमिनों के घर में। वाई? बिकॉज वहां पर खुदा का नाम लिया जाता है। Why will you find the nur in the homes of the mu'mineen? Because they are the one who remembers him. When you remember him, he comes into your home. When you remember him with your heart, he penetrates and enters into your home here, in your heart, in your personal world. आप समझिए कि जब जब आप खुदा को याद करते हैं अपने घरों में, तो खुदा आपके घरों के अंदर दाखिल होता है, और जब जब आप खुदा को दिल से याद करते हैं तो खुदा अपनी जगह बनाता है आपके दिल में और उसके अंदर उतर आता है। Second line, and because of that becomes divine and is indeed the one which stays pure. उसकी वजह से, खुदा के अंदर आने की वजह से, अब वो रूहानी तौर पर जिंदा हो जाता है और हमेशा के लिए नूर के साथ पाकीज़ा हो जाता है। Due to the penetration, due to the entry of Allah's nur and the didar in the heart of the mu'min, he becomes divine, inspired, and he becomes pure with his didar, with his nur. You see why this Ginan was chosen, because this Ginan tells us how it happens. When does it happen? ये गिनान इसलिए लिया गया था समझने के लिए, क्योंकि ये गिनान हमको बताता है कब और किस तरह से आपके अंदर खुदावन ताला की जगह और नूर और दीदार आ सकता है।
ये गिनान पढ़ाते हैं पीर. This is what Pir is teaching us. How and when. That's what he's teaching us. Subhanallah. Let's come to the next part. The third part. Eji Imam Pechano. I don't think we can emphasize more on this part than we have in every single classes session that we have taken over last 2-3 years. Recognition of Imam from the Farman, recognition of Imam from the Quran, recognition of Imam from the Ginan, recognition of Imam from the Dais and Peers books, again and again and again. Here, continuation with this Ginan, that one must recognize the Imam. If you recognize the Imam, अगर आप इमाम को पहचान लेते हैं जिस तरह से उसको पहचानने का हक है, that is the straight and the true way. वही सीधा और सच्चा रास्ता है. If अगर you recognize the Imam of the time, that is the straight path and that is the true path. Without the Imam, there is no Sirat al-Mustaqim. Without the recognition of Imam, there is no straight path. इमाम की शनाख्त के बगैर ना तो कोई सीधा रास्ता है और ना ही कोई सच्चा रास्ता है. इमाम की पहचान is the fundamental principle of our tariqah. Who said that? Mullah Baba, 1995, Moscow Farman. The recognition of the Imam is the fundamental principle. क्या फरमाया इमाम ने? कि इमाम की पहचानी हमारे मजहब का असूल दीन है. इसके बगैर असूल दीन नहीं है. आप असूल दीन के फरामीन पढ़ते हैं लेकिन इमाम की पहचान नहीं है तो बस आप फरमान पढ़ते हैं इमाम की पहचान के बगैर. इमाम की पहचान ही आपको वो समझ दे सकती है, आपको वो रोशनी दे सकती है जिससे आप फरामीन, गिनान, कुरान और दूसरे इल्म को पढ़, समझ और उस पर अमल कर सकते हैं. It is must, fundamental requirement, principle of our tariqah, the recognition of Imam, because that is the straight and the true path. Then you will attain and abode in his paradise. यहाँ पर his का word जो है वो नाचीज ने जोड़ा है. गिनान के अंदर है कि फिर आप जन्नत में दाखिल होगे. In the Ginan, the word his is not there. The word his is not there. I have added this word. Why? Why would I add any word into the Ginan? For our understanding only. That then you will enter, you will be in the paradise. But then Farman says, who cares for the paradise? Who wants to enter the paradise? Paradise itself is a jail cell. जबकि फरमान फरमाते हैं अगर हम इसको लेते हैं कि फिर तुम जन्नत में दाखिल होगे तो जन्नत तो खुद एक जेल खाना है, तो किसको जन्नत में जाना है? लेकिन just by understanding this Ginan and adding that word his paradise, what we are saying, then you will be fanafi imam. इस अल्फाज को यहाँ पर लगाने का मतलब यह है
कि हमको उसकी जन्नत में जाना है, इमाम की जन्नत में जाना है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हमको फनाफी इमाम होना है। आप समझिए, इसलिए यहाँ पर समझने के लिए इसको यहाँ पर जोड़ा गया, समझने के लिए। नेक्स्ट two part together are very, very important. First, as a disclosure, those who does not submit, believe in the Imam as Ali Allah, and those who does not do prostration to the Imam, the Adam is Zaman. Disclosure, be alert. There is some language coming here which you may not like or agree. आप में से वो लोग, खुदा ना खास्ता, I hope there is none on this line who does not believe in Imam. लेकिन अगर कोई ऐसा है जो इमाम पर भरोसा, यकीन, ईमान नहीं रखता, यानी कि जिस तरह से ईमान रखना चाहिए उस पर, और इमाम को सजदा नहीं करता, उसके लिए यहाँ पर एक कड़क, बहुत ही मुश्किल मिसाल बयान की है पीर साहब ने। और वो मिसाल ली है उन्होंने इब्लीस, शैतान से। So let me come to this two verses together. That Iblis, he was an angel and he did worship a great deal. Matter of fact, he had enough knowledge of the 7 earth and 7 heaven. If you wanted to know what are those 7 heaven and 7 earth, ask me at the end. Iblis जो फरिश्ता था वो बहुत ज्यादा इबादत करता था, बल्कि उसके पास 7 जमीनों और 7 आसमानों का इल्म भी था। अगर आपको जानना है कि ये 7 जमीन और 7 आसमान क्या थे, तो आप आखिर में पूछ सकते हैं। In other words, he had lot of ilm and he did do lot of ibadat. Then he could not, did not refuse to follow the farman of prostrating to the Adam who was Allah's vicegerent, Khalifa. He refused to prostrate, refused to obey the farman of Allah. Remember, he was angel, then he became shaitan. यहाँ पर पहले, मगर अजाजिल ने आदम को सजदा करने से मना किया और फरमान नहीं माना, तो वो गुरूर करने लगा और इग्नोरेंट में, जाहिलों में शामिल हो गया। He did not follow the farman, he refused to follow farman, and he was proud of himself that he has done so much ibadat, he has so much ilm of the 7 stages, because he became ignorant of the fact and he did not follow the farman, he became from angel to shaitan. You can see here today, because this Gnan is not about Azazil 7,000 years ago. This farman, this Gnan is not about the Iblis 7,000 years ago. Today, this history is repeating. We have Adam as Zaman. Those who refuse
to prostrate to Adam Zaman. They may be ibadat guzar. They may have lot of ilm and knowledge, but if they do not prostrate to the Imam Zaman, they do not recognize the Imam Zaman, as Iblis did not recognize the Adam, then that ibadat, that ilm will not do you any good, and you will become part of the army of, the follower of, just like Azazil, Iblis, because you are arrogant at that point. God forbid any of you, any of us would become part of that group. Inshallah, we are mu'minin and we accept the फरमान and prostrate to the आदम ज़मान. यहाँ पर उर्दू में बताते चलो कि इब्लीस था तो फरिश्ता, बहुत इबादत भी करता था, उसके पास सात जमीन और आसमान का इल्म भी था, लेकिन जब उसने आदम को सजदा करने से इनकार किया, तो ये उस इब्लीस की बात नहीं हो रही है, हमको क्या फायदा उसने क्या क्या नहीं किया, हमारी बात हो रही है कि आज हम कितनी भी इबादत कर ले, कितना भी इल्म गिनान पढ़ ले, अगर हम इमाम को नहीं पहचानते हैं और इमाम को सजदा नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि इमाम तो एक इंसान है और मैं उसको सजदा नहीं करता हूं, तो वो अपने आप को इब्लीस के बराबर करार देता है और कहता है कि मैं ज्यादा समझता हूं, मेरे को बहुत इल्म है और मैं तो इमाम को सजदा नहीं करूंगा। जिस तरह से इब्लीस ने सजदा नहीं किया, आप भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता। ऐसा कभी भी कोई ना करे। आप सब हकीकी मोमिनीन है और आप समझदार है, हकीकी समझदार है, इमाम को जानने पहचानने वाले हैं। आप इसके अंदर नहीं आना, वरना आपका शुमार जाहिलों में होगा, इब्लीसों में होगा, शयातीन के अंदर होगा, फरिश्तों के अंदर नहीं। Last point, those who prostrate to the Adam, the Imam Zaman, are called angels. Those who does not prostrate to the Adam, Imam Zaman, are called Azazil, Shaitan, ignorant. Very, very hard point. And I do not take any pleasure in saying this. God forbid any of us ever become so proud and say, I know better, I will not prostrate to the Adam Zaman, Imam Zaman. मुझे उम्मीद है कि इस लेसन के बाद हम में से कभी भी कोई ऐसे मकाम पर नहीं पहुंचेगा कि जहां पर हम ये कहें कि इमाम तो एक इंसान है और मैं ये मिट्टी का पुतला है और मैं उसको सजदा नहीं करूंगा, और अपने आप को फरिश्तों की लिस्ट में से निकालकर इब्लीस की जगह पर खड़ा कर दे, खुदा न खास्ता। हम ऐसी दुआ करेंगे, या मौला हमारा ईमान आखिरी दम तक सलामत रखना, हमें अपने गिनान और फरमान के अंदर रखना। या मौला मेहरबान, हमको तेरी हकीकी समझ देना। या मौला अपने नूर की रोशनी में हमारी हिदायत फरमाना। या मौला मेहरबान, please guide us on true Sirat al-Mustaqim, and please guide us with your light, your nur, and your true Faramin and Ginan, so we never ever become part of the ignorant one who have and is refusing to prostration of the Imam, the Adam Zaman. Ameen Ya Rabbal Alameen. Let me stop here so we have some time for questioning.
Subhanallah, sir. Friends, please share your questions in the chat. Sir, we have one question. Friends asking, all the Ismailis except Imam Zaman as the manifestation of Allah. Then why Peer has given this example or teaching to us from time to time? How does it apply to our time? Okay. Whenever you are asking a question, I would humbly request you not to use word why. Why in English language is an argumental, not a question. The question correctly can be asked, and this is a good question, that when we all accept Imam as the Mazhar-e Allah, the manifestation of Allah, then what would be the reason for this Gnan? What would be the reason for this Gnan? And what is the Talim, knowledge, ilm in this Gnan in our time? So this is my humble request. Do not use the word why in your question, because that is argumental. With that saying, is such a beautiful question. I may not agree with your statement 100%. Most of us believe in Imam-e-Zaman, Adam-e-Zaman as the manifestation of Allah, but others believe in Imam as human. You can look around yourself, in your family, in your Jamaat, there is a 50-50 chance that half would not believe in Imam as Ali Allah, as the true manifestation, Zahur of Allah. आप अपने करीब करीब देखें, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आप ही की जमात के अंदर कि जो इमाम को तो मानते हैं लेकिन हादी के तौर पर, ज़हूर के तौर पर नहीं, अली अल्लाह के तौर पर नहीं, और वो इमाम को सजदा नहीं करते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे जैसा इंसान है, जिस तरह से इब्लीस ने कहा कि आदम तो एक मिट्टी का पुतला है, और इस बात को लेकर वो इब्लीस की सिफ्त के अंदर जमा हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं. So you see, this Gnan is as relevant today as it was 607 years ago, and it will be as relevant tomorrow and 100 years from tomorrow. क्योंकि हर हमेशा हर जमाने में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इमाम को मानते हैं मजहर खुदा के तौर पर, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इमाम को अपने जैसा इंसान मानते हैं. अगर आप संडे मॉर्निंग की क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, so we are running a series of lecture on have you recognized the imam. Wama qadrullah qadri. Have you appreciate the imam the way you should appreciate him? Have you recognized the imam as you should recognize him? We are running that subject every week on Sunday morning for last few weeks. Today is part 6 of that. Very beautiful question. Thank you for asking. Ji. Sir, friends are asking the explanation of the 7 day, 7 Asman and 7 Zameen. Ji. Azazel, Iblis, had the knowledge of the 7 earth and 7 heavens. अजाजिल के पास 7 जमीनों और आसमानों का नूर था, लेकिन इमाम को नहीं पहचाना उसने. पहले आप इस बात को याद कर लें. First, you remember and understand this. Azazil had the knowledge of the 7 earth and 7 heaven,
and I will explain what those earths and heavens are. But he did not recognize the Imam of the time, and he refused to prostrate the Nur which was blown to the Adam, and he said, no, he is just a human. Just like today, there are a lot of Ismailis will say Imam is nothing but a human. Okay? What are the 7 heaven and 7 earth? Imam is the heaven number 8. So remember that. And now with that understanding, first earth, absolute earth is Mustajib, Mazun Medud, Mazun Mukammal, Dai Medud, Dai Mukammal, Hujjat, Bab. Those are the 7 heavens, and each heaven has the earth. For the Bab, the Hujjat is the earth. For the Hujjat, the Dai Mutalak is the earth. For Dai Mutalak, Dai Medun is the earth. For Dai Medud, Mazun Mutalak is the earth. For Dai Mazun Mutalak, Mazun Medud is the earth. And for the Mazun, the absolute earth is the Mustajib. He had crossed all 7 levels. From a Mu'min, he became Mustajib, Mazun Medud, Mazun Mutalak, Dai Medud, Dai Mutalak, Hujjat, and Hujjat Azam. But he could not get to number 8. He did not recognize the Imam of the time. He could not see the Nur which was blown into the Adam. And that's why he was called ignorant. Even though he had the ilm of all this, but he refused. He became proud that how come I have all this ilm? And he did say, Ya Rab. He accepted the Rab. Ya Rab, I accept you. I will never accept this Adam. Let me give you a very good example of that. The Christians before Prophet Muhammad believed in Allah, did not believe in Muhammad. Muslims believed in Allah and believed in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, did not believe in Mullah Ali. You see, Imam says and Pir says and the Quran says, always believe in the living Imam of the time. Previous doesn't count. Present counts. Always believe in the Imam of the time. Always recognize the Imam of the time. Iblis did not recognize the Adam, the Nur, the Imam of the time. And that's why he said, I have so much ilm, I know everything. Ya Rab, I believe in you, but I'm not going to prostrate to Adam. आप समझ गए कि इब्लीस के पास बहुत इल्म था, उसने बहुत सारे दर्जात को क्रॉस किया था, लेकिन वहां जाकर उसके अंदर गुरूर आया कि मेरे पास इतना इल्म है, या रब मैं तेरे को तो मानता हूं, लेकिन मैं आदम को, इमाम जमान को नहीं मानता हूं और मैं उसको सजदा नहीं करूंगा। खुदा को तो वो या रब कहता था। जिस तरह से मोहम्मद से पहले क्रिश्चियंस अल्लाह को अल्लाह ही कहते थे, लेकिन जब मोहम्मद आया तो उसको नहीं माना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली को नहीं माना, जबकि इमाम जमान, जमाने के इमाम को मानना होता है। पिछले को माना तो हिंदू भी राम और कृष्णा को मानते हैं। जी।
So we have a couple of more questions. Uh, what is the reason that you use Shaitan did not prostrate to Adam Zaman and Imam Zaman? Are you saying that there are two personalities that Shaitan did not prostrate? So we have Imam available today, but where is Adam? Because you said we are not prostrating to both. Imam is Adam Zaman. So simple. Imam is Yusuf Zaman. Imam is Ale Nabi, Aulad Ali, not two but one. Imam has the Nur which was blown into the Adam. Imam has the same Nur which was given to the Adam. So I'm sure you understand that Imam is called Adam e Zaman, Yusuf e Zaman, Ibrahim e Zaman, and Ali e Zaman as one. Nur is one. Thank you for asking. Do not stay confused. If you have a question, ask. Nachis will try my best to reply in the easy manner. जो इन्होंने सवाल पूछा कि क्यों हमने आदम को इमाम को आदम ज़मान कहा, क्योंकि इमाम के अंदर वही नूर, वही रूह है जो खुदावंद ताला ने आदम में फूकी थी, इसलिए हम इमाम ज़मान को आदम ज़मान कहते हैं और सजदा जायज है आदम ज़मान इमाम ज़मान को. वेरी गुड जी. So we have another question. So in the first part of dua, there is a mention of the cursed ones. Would this be the people that don't recognize the Imam of the time? Yes, you could say that. In the dua, Surah Al-Hamd, there are mention of three kind of people. I want you to remember this very, very clearly, so you have a clear understanding of Surah Al-Hamd and the three kind of people. सबसे पहले आपको दुआ के अंदर सूरह अल-हम्द के अंदर तीन किस्म के लोगों को ढूंढना होगा, ताकि आप वाज़ेह तौर पर ये बात को समझ लें कि हमारी ही जमात के अंदर तीन किस्म के लोग हैं. बार को छोड़ें, तीन किस्म के लोग हैं. एक जो सीधे रास्ते पर है, यानी कि इमाम के पीछे पीछे चलते हैं, कोई चू चरा नहीं, सिरातुल मुस्तकीम पर इनाम याफ्ता लोगों के पीछे चलते हैं, जो पैगंबर, आइमाए तायरीन, पीर और दाई हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं. That's the first type of मोमिनीन. सेकंड, जो सिरे से मानते ही नहीं है, इस्माइली तो है, मानते नहीं है, वो सिरे से नहीं मानते हैं, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ करते हैं, वो मानते नहीं है, बस नाम के इस्माइली है. फिर तीसरी किस्म के है जिसके लिए खुदा ने कहा कि उस पर मेरी लानत है, और वो क्या करते हैं, जमात के अंदर बैठकर इमाम के खिलाफ बातें करते हैं, लोगों को इमाम के खिलाफ वर्गलाते हैं और कहते हैं कि देखो ये तो इंसान है, इसको सजदा नहीं करना, तुम शिर्क करोगे. खुदा ने कहा उन पर मेरी लानत है. There are three kinds. One, who are on the Sirat al-Mustaqim, following on the path of the rewarded one, the Nabi, Prophet, Aimai Tarin, Pir and Dais, they are on the correct path. Second, who refuse to accept from the get-go. From the beginning they don't believe, but they don't say anything. They are Ismaili in the name, not by action. Then there's a third kind, which Allah says they have been cursed, because they are the one who sits in the Jamaat, do not prostrate to Imam, and also tell others, deviate others from following the Imam and prostrating to him. And Allah said, they are the cursed one. They are the worst of the Jamaat. खुदा ना खास्ता
we never come into their trap. Ji. Friends, if you have any questions, please unmute your device. याली मदद याली मदद आपने बोले कि इमाम अक्ले कुल है और नक्शे कुल मीन्स क्या? universal soul is the totality of the intellect and totality of soul. उर्दू में बोलेंगे? जी, वो अक्ल का भी मजमुआ है और रूहों का भी, वकुल्ले शहीन है. जी. So we have a couple of questions in the chat. Friends asking, aren't we all Adam? As we have Mola Noor in us, isn't this mono reality? We can all be Adam. The second question is correct. We can all be Adam, yes, definitely, but potentially we are Adam, actually yet to be seen. I cannot claim to be at that level. We are Garib and Nachis. We cannot claim to be at the level of Adam, equivalent to the Imam. I would not say that for myself, but for you, if that is your belief, absolutely, potentially, we all can be, actually, yet to be seen. When we are Fanafi Imam, maybe then. Until then, I would not claim to be. अगर आप इस सवाल को समझ गए कि हाँ हम भी आदम में शामिल हो सकते हैं इमाम के नूर के साथ, लेकिन जब हम फनाफी इमाम हो जाए तब तक हम गरीब और नाचीज कहाँ और इमाम ए बरक कहाँ. वो नूर का दरिया है, हम एक जरा है, कोई बराबरी नहीं है यहाँ पर. लेकिन नाउमीदी नहीं है, कल अगर हम इमाम में फना हो जाते हैं तो इंशाल्लाह हम भी उसके अंदर एक हो सकते हैं. फिर हम कह सकते हैं कि वी आर वन इन द मोनो रियलिटी, वन विद द इमाम. Potentially yes, actually I cannot claim that for myself. Ji. So another question. In Ginan, there are various names given to Imam like Shah, Pir, Shah, Sahib, Mola, Qaim. Are all these talking about all Imam or some specific Imam? Oh, very good question. बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि गिनानों के अंदर कभी कभार हम देखते हैं कि अलग अलग नामों से इमाम को याद किया गया. कभी इसको राजा कहा गया, कभी महाराजा कहा गया, कभी शाह कहा गया, कभी साहिब कहा गया, कभी मौला कहा, कभी कायम कहा, कभी इमाम कहा. सो एक तरफ से ये तमाम एक ही इमाम की बात हो रही है, लेकिन इशारतन कभी कभार एक से ज्यादा जमाने के इमाम की बात होती है. समझ गए आप? पहले तमाम अल्फाज इमाम ही के लिए इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन कभी कभार इशारतन जमाने के अलग अलग जमाने के अलग अलग इमामों की बात हुई है, लेकिन एज अ होल इमाम की बात हुई है. Very good question. That all these different words used in Ginan, sometimes Shah, sometimes Sahib, sometimes Mullah, sometimes Imam, sometimes Qaim, those are all used for the Imam, but sometimes as the learning and teaching and ilm, we have given us the different understanding of the Imams of the different times. So we can differentiate which Imam is drawing our attention to. For example, Kaim Jino Varo Ause. Now here Pir is talking about that there will be a time at the time of the Qiyamah when there will be Imam
a qaim would come. You see, a symbol in the Quran of the Imam of the time of Qiyamah. Very good question. Thank you. So I don't see any question in the chat. Friends, unmute your device. If you have any questions, please. यादी मदद Ya Ali Madad. सर जैसे आप समझाए ना ये अजाजिल का जो सिजदा नहीं करे थे तो सर इलम लेके इबादत लेके भी शैतान बन सकते तो अभी हम सीख रहे तो अब हम शैतान नहीं बनना उसके लिए हम क्या ध्यान रखना सर हाँ, इमाम की फरमान बरदारी बस, और कुछ ध्यान नहीं करना है। इमाम बोले दिन तो दिन, रात बोले तो रात। एक चीज का ध्यान रखना, कितना भी इल्म ले लेवे, कितनी भी इबादत कर लेवे, इमाम से अगर हमने रूह गर्दानी की तो फिर हम अजाजिल में शामिल हो गए। रिगार्डलेस ऑफ कितना भी इल्म आ जाए, कितनी भी इबादत कर लेवे, इमाम की फरमान बरदारी सबसे ऊपर है, क्योंकि इमाम की फरमान बरदारी के नीचे इबादत, इमाम की फरमान बरदारी के नीचे इल्म आता है। तो कोई कहे कि मैंने बहुत इल्म ले लिया, बहुत इबादत कर ली है, तब मुझे मौला का फरमान मानने की जरूरत नहीं है। तो हमारे नजरों में बहुत सारे लोग हैं जो फरमान पढ़ते हैं लेकिन फरमान बरदारी नहीं करते हैं। यानी कि वो क्या कहते हैं कि ये फरमान मेरे लिए आसान है, ये फरमान मेरे लिए मुश्किल है। जिस तरह से अजाजिल ने कहा, या रब मैं तेरे को तो मानता हूँ, आदम को नहीं मानता हूँ। तो देखा, कुछ फरमान को उसने माना, उसको या रब बोला, लेकिन आदम को सजदा करने से इनकार किया। मोहम्मद को माना, अली को मानने से इनकार किया। ये हुआ कि अपने आप को बचाना। एक चीज का ध्यान रखना, इमाम कहे दिन तो दिन, रात तो रात, नो क्वेश्चन, नो वाई। वाई नहीं कर सकते हम, सवाल कर सकते हैं, वाई नहीं कर सकते हैं। इब्लीस ने अगर पूछा होता व्हाट एंड हाउ, अल्लाह वुड हैव टोट हिम, बिकॉज ही सेड वाई, आर्गुमेंटल, फिर वो रास्ते से हट गया। जी, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। और सर ये अजाजिल ने जो प्रॉमिस ली कि मैं आपके बंदे को भटकाऊंगा इसकी तावील है ना सर मतलब वो क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन उन्होंने जो पूछे थे तो अपन सब वो उनके अभी ताबे में चले जाते हैं या हम वसवसे में चले जाते हैं तो इसकी क्या तावील है सर तावील नहीं है, इसकी माने है कि जिस तरह से हमारे अंदर दो फरिश्ते हैं, एक रिप्रेजेंट करता है इमाम को, एक रिप्रेजेंट करता है शैतान को। वो दोनों हमारे अंदर है और हम उसको फ्री विल बोलते हैं। कभी हम इमाम की तरफ और इमाम के फरिश्ते को सुनते हैं, कभी हम शैतान की तरफ शैतान के नुमाइंदा फरिश्ते को सुनते हैं। लेकिन फ्री विल हमारी है कि हम किसको सुने। मुझे ताजुब होता है कि क्यों कोई शैतान को सुनेगा, क्योंकि हम शैतान के चेले नहीं हैं, हम तो इमाम के चेले हैं। तो हमको हमेशा अपने कान, अपना ध्यान इमाम की तरफ रखना चाहिए। बस यही इसकी मायने है। जी, थैंक यू सर थैंक यू सो मच शुक्र मौला thank you. If anyone needs to for me to repeat again in English, please let me know. जी, So we have questions. In most of the Gnan, they mention of karma. As Smiley, it is said we have 8 lives. Please explain. all right. I believe at the beginning of this session, we explained that our peers, when they came to Barisagir, India, the greater India, we were all Hindus, so they were taught with a vocabulary
the vocabulary we understood, and they use the same vocabulary in the Ginan. If you heard Nachiz and Garib earlier at the beginning of the session, then the language was used accordingly to the time and the culture, the background that we were coming from. I would not use that language today. It's not because I don't want to use, because that is Imam's Farman, that we are no longer using that language, but whenever we want to understand, we can understand in according to our time and culture and the place and the vocabulary of today. So today's vocabulary would be, you will receive as you do. You will be given as your deeds. And what do you mean 8 lives? Did not just explain that you can go from Momin through Mustajib to the Mazun to the Dai to the Hujjat to the Imam, and Imam is number 8. I just explained that a few minutes ago. Different language, different time, different understanding. G. Sir, we had another question. But Iblis also created by Allah, because eventually Iblis will become part of Allah. So is this just staged like a drama and rose so that we can pay attention? You can say that, but I would not say that. Let me tell you why would I not say that. Because if you take Allah's creation as a drama, then we are already saying that we do not want to be part of that drama. You know, even though you may be right in your thinking, but sometimes language matters. How do we verbalize matter? And who are we verbalizing to matters. So I would humbly request that even though you may be right, this is not the right way of explaining or verbalizing. I believe you understood what I'm trying to say. G. There are no questions in the chat. सॉरी सर, अभी आप बोले, जरा उर्दू में बोलेंगे प्लीज? जी, हमारी बहन ने एक सवाल किया कि जबकि इब्लीस ने खुदावंद ताला से इजाजत मांगी कि मैं खुद सिरातल मुस्तकीम में बैठकर इनको वर्गलाऊंगा, तो क्या ये एक मिली भगत थी और दोनों ने मिलकर एक ड्रामा करा? तो नाचीज ने अर्ज की कि जब हम कोई ऐसे अल्फाज यूज करते हैं तो हो सकता है कि हम किसी को, हम तो समझ जाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, किसी और के लिए इसके अंदर मसला पैदा हो सकता है। उसके लिए जरूरी है कि हम सही जबान को यूज करें। जिस तरह से अगर नाचीज यही सवाल पूछता होता तो किस तरह से पूछता कि खुदा ने आदम को, खुदा ने इब्लीस को क्यों इजाजत दी सिरातुल मुस्तकीम पर बैठने के लिए, जबकि इब्लीस सिरातुल मुस्तकीम पर बैठकर मोमिनों को वर्गलाता है, तो ऐसी इजाजत क्यों दी? तो खुदा ने उसी मकाम पर सूरह बकरा के अंदर आप देख लें, आयत नंबर 32 है कि क्या फरमाया
कि अगर तू सिरातुल मुस्तकीम पर बैठकर मोमिनों को वर्गलाना चाहता है तो मेरी वार्निंग है कि मेरे मोमिन कभी भी तेरी बातों में नहीं आएंगे। खुदा ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और क्या कहा, मेरे मोमिन कभी भी तेरी बातों में नहीं आएंगे। Even though Iblis was granted permission to sit on Sirat al-Mustaqim, but remember what Allah said after that. There are grant your wish, but my mu'minin will never ever come in your trap, because my mu'minins are Imam Shanasan. My mu'minins are Nur Shanasan. My mu'minins only follow me and listen to me. They will not listen to you. They will not follow you. They will not come in your trap. So as a totality, the question would be, what was the reason that he was granted the permission? So he may test us. Allah may test us to see are we the true follower and follow the Imam Zaman, or do we come in the trap of Shaitan? Are we the true follower? Have we recognized the Imam correctly? Have we recognized the Imam with his manifestation, with his nur? Then we will never come in his trap. That was the reason that he was granted the permission, so he may test us. Allah may test us. Ji. Any other comments or question? So we have one question. If people do not go through the 8 levels as you described during their lifetime, then do they need to complete them once they pass on? Absolutely. बहुत अच्छा सवाल जिसने भी पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा. Absolutely. If you cannot become from Momin is sitting on the ground. At least you need to be in the part of Mustajib. If you cannot cross the level of from Mustajib to Bab, then you would need some time to cross those levels. At the after you pass away, the ilm will be given. These levels are crossed with ilm, ibadat, ilm, ibadat, ilm, ibadat. And if you don't do that here, ilm and ibadat will be required hereafter. बहुत अच्छा सवाल है कि अगर हमने 8 दर्जात को क्रॉस नहीं कर लिया अपनी जिंदगी में, तो फिर आखिरत में मरने के बाद ये करना पड़ेगा. वहां पर हमको इल्म इबादत करते 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 हम तमाम दर्जात को क्रॉस करके फिर फनाफी इमाम हो गए, उससे पहले नहीं. बहुत अच्छा क्वेश्चन. ग्रेट, थैंक यू. Let's make a last comment, last question. Yeah, Maulali Madad. Sir, I'm just amazed to think that Azazil or Iblis, having reached that level of becoming an angel with all the knowledge, and yet to fall into the trap of having pride, it is kind of scary to think. mind-boggling. Yes. You know, if you look around you today, it would make it easier for you to find Iblis all around us. Iblis, they are all around us. Educated, most elite. And then they get into the trap of pride.
that I know so much, they forget to ask for Imam's mercy. They forget to ask for repentance. And they think that they know so much. The example I had given earlier, don't you know, I'm sure every one of us knows somebody in our Jamaat, very educated, maybe have some kind of seat, and then they will tell you, oh, Imam is nothing but a human. Don't prostrate to him. You see, educated, ibadat guzar, but because they think they know more than Imam, that's where the problems start with. And they become pride. They become part of the ignorant. हाँ, तो उर्दू में भी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको इब्लीस को समझना है तो पीछे के जमाने में नहीं, 7,000 साल पहले जाने की जरूरत नहीं है। आज भी आपको इब्लीस हमारे ही दरमियान में मिलेंगे, पढ़े लिखे होंगे, इबादत गुजार होंगे, हमारे करीब होंगे, और फिर वो क्या कहेंगे, इमाम तो अपने जैसा इंसान है, खुद भी सजदा नहीं करेंगे, तुमको भी सजदा करने नहीं देंगे, बल्कि आपको गिल्ट ट्रिप के अंदर डालेंगे। वही तो इब्लीस है, वही तो शैतान है कि वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, इबादत गुजार होने के बावजूद भी, उसने अपनी अक्ल दौड़ाई इमाम की अक्ल के आगे। मौला का एक फरमान है कि आप अपनी अक्ल ना दौड़ाएं इमाम की अक्ल के सामने, लेकिन वो अपनी अक्ल दौड़ाते हैं। तो यही इब्लीस थे, इब्लीस है और इब्लीस हो गए in all the time. But look at the positive point कि लेकिन हर जमाने में फरिश्ते भी होते हैं। पहले भी फरिश्ते थे, आज भी फरिश्ते हैं, कल भी फरिश्ते होंगे। जो इमाम को सजदा करेंगे वो फरिश्ते होंगे। So you see how easy it is, but it is a fine line between angels and Iblis. Prostrate, angels. Refuse, Iblis. Fine line in the middle. G. Yali Madad, sir. Yali Madad. I just wanted to add, if I may allowed to, on this comment between Iblis and Shaitan. One of the important things which I think is beautiful is we always have the Imam to guide us to find the right path and keep away from the bad path, which means follow the angels and keep away from the Iblis. That's all. Thank you. Subhanallah. Hey, Sirat al-Mustaqim, what just Dr. Saib said. Dr. Saib just said that. Hey, Sirat al-Mustaqim, guide me on the right path. That was his comment. Thank you, Dr. Saib. So, should we stop here? Sir, we can I say have a comment. one question in the chat, sir. G. So the friend's asking, do angels fall? I thought angels can never be wrong. Very good question. Very good question. There are two kinds of angels. Insi angel, Samavi angel. Samavi angel, heavenly angel, does not fall. Insi angel can fall. So question would be how? Insi angel has a free will to say yes or no. Heavenly angels does not have a free will. They only follow. Do you understand? आप समझ गए कि दोबारा से उसको उर्दू में बयान करो कि दो किस्म के फरिश्ते हैं, एक इंसानी फरिश्ते हैं और एक आसमानी फरिश्ते हैं। इंसानी फरिश्ते जो है, जमीन के जो फरिश्ते हैं, उनके पास फ्री विल है, तो वो हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं,
और वो गिर सकते हैं। समावी फरिश्ते जो है वो तो सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनके पास फ्री विल नहीं है, तो वो गिर नहीं सकते हैं, वो अपनी जगह पर कायम और दायम रहते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। याली मदद। याली मदद। सर जैसे आपने बोला कि रूह के 8 दर्जे हैं, 8वें दर्जे के बाद फना फिल्ला या फना फी इमाम होंगे, तो हमें जी, क्या पता, 8वां कैसे दर्जा पता, फनाफी इमाम का है। 8वां 8वां है, दर्जा फनाफी इमाम। हमें कैसे पता चले कि हम किस दर्जे में हैं, या हर दर्जे की क्या खुसूसियात है? जी, बहुत अच्छा सवाल, थैंक यू फॉर आस्किंग। So let me repeat this question in English, then I will explain in Urdu English both. My sister is asking that there are 8 steps to become Fanafi Imam. How do we know where we are? So I will start with the Imam's फरमान। सबसे पहले हम इमाम के फरमान को सुन लेते हैं कि जब आपको वो नूर मिलेगा, जब आप इमाम में फना होगे, तो आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। You will know. And that was number 8. All right, let's start from number 1. Mustajib is the one moment which say, I do not know anything, I like to learn. That's how you will know if you are a mu'min or mustajib. Mu'min, he just sits in Jamaat Khana and does not learn anything. In other words, he sits on the floor. आप एक लेक्चर को सुने जो प्लेनो जमात खाने के बनावट के ऊपर है। वहां पर एक्सप्लेन किया गया है कि मोमिन कौन है और बाकी के जो दर्जात है ना वो कौन कौन से हैं। मोमिन are all who goes to जमात खाना and sit on the floor. मुस्तजीब उसमें से वो है जो कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सीखना है। Instantly he becomes the pillar, the part of the जमात खाना. He is no longer on the floor, he becomes part of the pillar and the जमात खाना. मुस्तजीब वो सीखता है। माजून में दूध जो थोड़ा इल्म रखता है और उसके बाद थोड़ी ताकत होती है कि वो दूसरों की तवज्जो दिलाए इल्म की तरफ, खाली तवज्जो दिलाए बस। फिर माजून मुतल्लक जिसके पास कंप्लीट इल्म होता है जमात को सिखाने के लिए। जिस तरह से कुछ कुछ हमारे मिशनरी, सब नहीं, कुछ कुछ हमारे मिशनरी, उनके पास मुकम्मल इज़्न होता है जमात को सिखाने के लिए। देन दाई जो इमाम की तरफ दावत करता है और सिखाता है कि किस तरह से इमाम को पहचाना जाए। फिर दाई मुतल्लक जो दाइयों को बनाता है। दाई मुतल्लक कौन होता है? जो दाइयों को बनाता है कि वो इमाम शनासी सिखा सके। आप कौन से दर्जे पर है वो आप सोच लें कि आप इल्म सीख रहे हैं, अभी अभी तवज्जो दिला रहे हैं इल्म के अंदर, आपके पास इज़्न है इल्म देने का, आपके पास इज़्न है इमाम शनासी का, आप इमाम शनास बनाने वाले दाई बनाते हैं। फिर आता है हुज्जत। हुज्जत का मतलब होता है पीर, पीर का दर्जा रखना। पीर का दर्जा कौन रखता है? जिसके पास इमाम का मुकम्मल इल्म और इमाम के नूर की सूझबूझ हो, वो पीर का दर्जा रखता है। हुज्जत बाप वो उसको कहते हैं जो इमाम का बेटा आगे जाकर इमाम बनने वाला है, उसको बाप बोलते हैं। और फिर 8वां नंबर इमाम का है। 9वां नंबर इमाम मौला अली असास का है। और ये 9 प्लेनो जमात खाने के पिलर्स है। आप जरूर उस लेक्चर को सुने, आपको बहुत मजा भी आएगा और बहुत ही इल्म भी मिलेगा। जी should we stop here, Kamle Sahib, or do we have any other comments or question? Ji sir, we can stop here. We don't have any questions.
Thank you everyone. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Thank you very much. Ya But we would Madad, like you Mawla to, Suki Salamat Abad Ali रहते Madad, please. Ali Madad, Yali Ya Madad. Ali Ali Madad, Madad. Ya Ali Madad, Thank Ya you, Ali Aziz. Madad, Thank thank you, Yali you. Madad. Thank you, Ya Ali Yali Madad, Madad, Ya Ali Aziz. Madad, Ya Ali Madad, Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Can we Ya Ali repeat Madad. this 8 steps next time, please? Sorry, क्या फरमा रहे हैं आप? Yali Madad, I just wanted, can we go through the 8 steps next time again, these? Sure. Please remind Okay. me or Kamran Sahib so he can ask. Yes, Kamaria said, please remember. I really And love this. I was writing it and then I got stuck somewhere. okay, if you are writing it, I can repeat, or Kamran Sahib can share in writing, and lecture recorded. Kamran Sahib can share with you. Okay, Shana, thank you. if you are in the Thank you. WhatsApp group, Shana sir, if you are in the WhatsApp group, I can share in the WhatsApp. Yes, I am. Thank you so much. Okay, I will share it in the group And then. thank you. Okay. Thank you, Aziz. Yeah. Thank you, Yali Madad, Yali Madad. Ya Ali Mola Madad, Sayyid. Ya Ali Madad. Ameen, Ameen. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Shukr Mola. या अली मदद मौला तुम्हारी मदद। सेवा कबूल करे या अली मदद Ameen, Ameen. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Ya Ali Madad sir. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. सर आज का लेक्चर बहुत औसम था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मौला। लेकिन बस वही वाली बात कि वो जो आपने अभी लास्ट में बोला कि वो वाला लेक्चर सुनना है तो वो शायद अभी कामरा साहब शेयर करेंगे तो हम लोग जो नहीं सुने वो सुन लेंगे। जी बहुत मजा, आपको मजा भी आएगा और उसके अंदर काफी डिटेल है कि मोमिन के बाद एक बंदा कहाँ जाता है इंशाल्लाह। थैंक यू एवरीवन। या अली मदद, या अली मदद। थैंक यू कामरा साहब। या अली मदद। या अली मदद, या अली मदद।